Hello students, again I'm here to teach you computer science for class 11th and 12th, and today's topic is file handling in Python. So we start with why do we require file handling in Python. तो थोड़ा सोचिए कि अब तक हमने जो प्रोग्राम बेसिकली बनाए हैं वो कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट तरीके की हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म की, लेकिन नाउ वी वांट टू स्टोर द डेटा. अब हमें कहीं डेटा को स्टोर करना है, हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं. तो अगर हम वेरिएबल्स या लिस्ट में डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो तभी तक वो मेरा डेटा स्टोर रहेगा जब तक कि मेरा प्रोग्राम एक्टिव है. एक्टिव में जब तक मैं उस प्रोग्राम पर काम कर रहा हूँ. जैसे ही मैं प्रोग्राम से एग्जिट होता हूँ मेरा डेटा लॉस्ट हो जाता है. लेकिन नाउ आई वांट टू स्टोर द डेटा फॉर द फ्यूचर यूजेस. For the future uses, we have to store the data in particular file. हमें फ्यूचर के लिए अगर किसी डेटा को स्टोर करना है तो हमें किसी फाइल में डेटा को स्टोर करना पड़ेगा. फाइन. दूसरा तरफ सोचिए थोड़ा कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें मैं किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और उसको कहीं मुझे स्टोर करना है, ठीक है, फ्यूचर के लिए. तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को एक फाइल से लिंक करेंगे और जो भी डेटा मैं एंटर करूँगा अपनी एप्लीकेशन के थ्रू वो डेटा सारा का सारा फाइल में सेव होता रहेगा. तो अगर मैं फाइल और पाइथन को ऐड करता हूँ, फाइल और पाइथन प्रोग्राम को ऐड करता हूँ, सो इट्स बिकम फाइल हैंडलिंग. तो विद द हेल्प ऑफ द फाइल हैंडलिंग वी विल लर्न हाउ टू हैंडल द फाइल विद द हेल्प ऑफ द पाइथन. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फाइल्स. So basically, if we are talking about my computer can support the different kinds of the file like images, like PDF format, Excel format, document format. But in case of the Python, it can support two types of the file. First is text file, another is binary file. In the text file, it stores the data in the valid characters format. It can store the alphanumeric value, it can store the alphabets, it can store special characters, but it terminates with a special character that is called EOL. EOL stands for end of line. So each line terminates with the special character that is called EOL. Next is binary file. Binary file stores the data in the form of the binary numbers, in the form of 0 and 1. So it stores the data in the form of the binary format like 0, 1, and it is the faster than the text file. Binary format files is the faster than the text file. With the help of the file handling, we perform CURD. CURD means C for create the file, R for reading a file, U for updating a file, and D for deletion of a file. Also, we can perform the others operation. We will talk later. Now next is how to open a file. So basically we use the open function to open a file, and the syntax is open, file name, and mode. Mode means the purpose why we are open a file. So basically we have the different modes like R. R means I am opening a file for reading purpose. A for append. Append means it is used to write the data in the file from the last of the text. For example कि मेरी फाइल में डेटा लिखा हुआ है और मुझे उसमें डेटा और लिखना है, तो जहाँ हमारा डेटा ख़त्म हुआ है फाइल में उसके आगे से स्टार्ट करता है अपेंड. W फॉर राइटिंग मोड. राइटिंग मोड मीन्स कि जब इसका काम क्या है कि डेटा को, जो फाइल में डेटा है उसको ओवरराइट कर देगा, जो डेटा है फाइल में उसको डिलीट कर देगा और स्टार्टिंग से लिखना शुरू करता है. X मोड यूज़ होता है किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए. अगर मुझे न्यू फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए वी यूज़ X मोड. Just look in the example. There is given the f equals to open and the file name, but there is no given any mode cause the default mode is R. This is for read a file. Fine. And in the next one, f open, the file name, and also given the mode. So there is no any difference
If we don't give any mode, so that means it's a R. Okay, so this is the example for how to open a file. For reading a file, we use different kinds of the method like read, read and, read line, read lines and given the argument, and read lines. Okay, the read function is basically used to read the whole the text file and read and given the one parameter n and means number of characters. We have to suppose we have to read the number 5 characters of my file, first 5 characters of my file. So we use read and n, where n is the parameter. It's showing the number of characters. Read line. So basically the read line is used to read a particular line of my file. Read lines and given the 3. 3 means we can give any number. So how many lines if I want to display or read? So we write here the number of lines we want to show. And the read lines basically show the all the lines of my file in the separating way. That means it shows the data of my file line by in the separating manner. For writing the data into the file, we use write method. So just use the write method to write the data into the file, and the format is given write parenthesis and your string or your text. Fine. So this is the way to write the data into a file. Now next is how to create a new file using the Python. So we use the same function, that is the open, and give the file name which you want, and the mode will be X. And one more thing, we cannot create the 2 files having the same name. Okay, so that means we have to create the file with a unique name.